and open the previous report that we're working on and press this edit button. Let me know once everyone's here. Everyone's here? Okay, all right. So now we are going to build a box plot. So I'll add a new worksheet here. And in this worksheet, the box plot that I want to build is something like this. Let me show it to you first on the plain thing. So what's a box plot? In box plot, we'll have one box in the center like this. Okay. Then there will be a median, and then there will be whiskers. Okay. So this is how the box plot looks. All right. So we're trying to build this, and we're trying to build a box plot for age. Okay. So we're trying to build a box plot for age. Now, since we know we want to build a box plot for age, we'll go to age, we'll select, we'll drag and drop it in the rows here like this. Okay. After that, we can go to the analysis and uncheck aggregate measures so that every value is a single value now. Okay, every value is a single value now. After that, you can go to the show me. Here, this whisker and box plot option will be highlighted. You can click on that. This shows your box plot. As simple as that. Okay, we didn't do anything. So pretty easy to follow. Let me know once you're able to do that. सर वो रो में लेने के बाद क्या किया, मेजर चेंज किया क्या? एनालिसिस में जाना है और वहां पे ये एग्रीगेट मेजर्स को अनचेक करना है. ये चेक रहेगा आपके पास, उसको अनचेक करना है. अच्छा, ओके. उसके बाद में शो मी में जाना है और बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट सिलेक्ट करना है. नाउ ये जो बॉक्स प्लॉट है आपका, दिस बॉक्स प्लॉट इज फॉर ऑल द डेटा दैट वी हैव. व्हाट इफ आई वांट टू सी जेंडर वाइज कैसा है बॉक्स प्लॉट. ऑलराइट. तो जेंडर वाइज बॉक्स प्लॉट चाहिए. अभी यहाँ पर क्या है, एक ही कॉलम है, राइट. सो आई विल हैव टू कॉलम्स हियर. सो जेंडर वाइज बॉक्स प्लॉट कैसे दिखेगा? सो दिस विल बी मेल, और ऐसी एक फीमेल के लिए में भी बॉक्स प्लॉट रहेगा. फीमेल के लिए ऐसा बॉक्स प्लॉट रहेगा. सो दिस विल बी माय होल थिंग. एक मेल के लिए रहेगा बॉक्स प्लॉट, एक फीमेल के लिए रहेगा बॉक्स प्लॉट, राइट. सो दैट इज व्हाट दिस जेंडर वाइज बॉक्स प्लॉट विल लुक लाइक. सो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो जेंडर है इसे ड्रैग करके हमें कॉलम्स पे ड्रॉप करना है. दैट्स ऑल. इट विल गिव यू फॉर फीमेल, इट विल गिव यू फॉर मेल. दोनों का एज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखाई दे रहा है, दैट इज व्हाट दिस whisker plot is showing. And as you can see here, median age. Yes, go ahead. Question, Harish.
वो अनचेक नहीं हो रहा है सर, जो सम है ना। ओके, एनालिसिस में जाके एग्रीगेट मेजर्स अनचेक नहीं हो रहा है। ओके, मैं वहां से नहीं किया। ओके। एनालिसिस में एग्रीगेट मेजर्स को अनचेक करना है। यू डोंट वांट टू एग्रीगेट द मेजर्स, यू वांट सिंगल वैल्यूज फॉर द मेजर्स। यस सर, डन। ओके, यस। यहाँ पे नहीं है। ओके, ये हो गया आपका जेंडर वाइज। और जब हम लोग बॉक्स प्लॉट पे माउस शुरू करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मीडियन पता चलता है, अपर विस्कर की वैल्यू, उसके बाद में लोअर विस्कर की वैल्यू, फिर ये हिंज की वैल्यू कितनी है 51, और ये नीचे वाले हिंज की वैल्यू कितनी है 37 और 27.2 एंड ऑल। ओके, what this is showing you is that the median of age of male is more than the median age of female in this particular data set. ये डेटा सेट है हमारा मॉल के रिपोर्ट के बारे में। दैट इज ऑल दिस रिपोर्ट इज टेलिंग अस। ओके, box plot are important to see if there are any outliers, to check what is the distribution looking like, and so on. If you see the age distribution, again, you will see something similar here. Okay, but यहाँ पे values थोड़े से overlapped है. So this box plot will give you a better picture of how the distribution is looking. I'm going to name this as age box plot. अभी हम लोग क्या करेंगे? हमारा जो फिल्टर हमने थोड़े लास्ट सेशन में ऐड किया था, which was on um, which was on एवरेज स्पेंडिंग, ठीक है, और जेंडर, दोनों पे फिल्टर ऐड किया था हमने। एज डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा शीट है उसमें दो फिल्टर्स एडेड है, एवरेज और जेंडर का। ठीक है, अगर आपके इसमें एडेड नहीं है तो यू कैन ऐड इट वेरी सिंपली। मैं फिर से दिखा देता हूँ कैसे ऐड करना है। मैं इन दोनों को रिमूव करता हूँ अभी के लिए। ओके, आई गो टू दिस एज बॉक्स, इसमें ऐड करता हूँ मैं अभी। ठीक है, जो नया रिसेंट वाला है। सो सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ जेंडर का फिल्टर। ओके, ऑल वैल्यूज जैसे के वैसे रखना है, नथिंग टू चेंज बिकॉज आई वांट टू शो ऑल द वैल्यूज। आई से ओके फॉर नाउ। ये फिल्टर मुझे यहाँ पे राइट साइड में दिखाना है ताकि मैं उसको चेक करूँ या फिर उसको चेंज कर सकूं जब चाहूंगा तो। जस्ट डू दैट। आई कैन से यहाँ पे बॉटम पे क्लिक बटन आता है एक ड्रॉप डाउन का, उस पर क्लिक करता हूं मैं एंड आई से शो फिल्टर, एंड द फिल्टर इज शोन ऑन द राइट साइड नाउ। ओके, एंड यू कैन यूज दिस फिल्टर एज you'd like. So इसको अगर मैं अनचेक करता हूँ तो पूरा डेटा चला जाता है। इफ आई वांट ओनली मेल्स, only male box plot will be shown here. If I want both male and female, I can just check male and female both, and both will be shown. Okay, we'll wait here for some time. Let me know once you're done. Done till here? Okay. अभी हम लोग, this is a this is a dimension जिसका फिल्टर हमने ऐड किया। Let's add a filter for a measure. Spending score का फिल्टर ऐड करते हैं अभी। Let's put this filter here. Okay. Spending score का फिल्टर है, and let's just say कि हमें करना है filter values, रेंज देनी है हमें ऐसी, और रेंज ही रखनी है हमें वैल्यूज में। ठीक है, जैसे अप्लाई फॉर नाउ।
ताकि सारे वैल्यूज आ जाए। जैसे हमने जेंडर को यहाँ पे राइट साइड में दिखाया, उसी तरह से हम लोग स्पेंडिंग स्कोर को भी दिखाएंगे राइट साइड में, शो फिल्टर के नाम से। तो ये हो गया स्लाइड बार अभी। ठीक है, अगर मैं देखना चाहूँ everyone whose spending score is greater than 50, all I have to do is I just have to drag it till the 50 here like this. 50 से ज्यादा जिनका स्पेंडिंग स्कोर है, सिर्फ उनका बॉक्स प्लॉट पता करना है मुझे। सो उनका बॉक्स प्लॉट कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा। Okay, I'll bring the filter back to the original position for now. Let me know once you're done with adding the spending score. Okay, alright. अभी क्या करना है, क्योंकि ये डेटा सेट सारे शीट्स के लिए कॉमन है, आई कैन अप्लाई दिस फिल्टर ऑन ऑल द शीट्स एंड मेक इट यूजफुल। ठीक है, अभी ये सिर्फ इस पर्टिकुलर शीट के लिए connected है, या फिर this filter is only applied for this particular sheet, but there are other sheets as well which can use that filter. So what I'm going to do is I'm going to click on this drop down button and I'll say apply to worksheet, all using related data sources। जितने भी डेटा शीट्स है, वर्कशीट्स है जो सेम डेटा सोर्स यूज कर रहे हैं, उनको से चेक कर रहा हूँ मैं। तो ये यहाँ पे एक आइकॉन आ जाता है विच इज टेलिंग मी दैट दिस इज अप्लाइड टू ऑल द शीट्स। अगर मैंने यहाँ पर इसको सिर्फ मेल का, अगर मेल को अनचेक कर दिया, सिर्फ फीमेल का डेटा रखा, नाउ ऑल द शीट्स आर गेटिंग अपडेटेड विद ओनली फीमेल डेटा। यहाँ पर सिर्फ फीमेल का डेटा प्रेजेंट है, यहाँ पर सिर्फ फीमेल का डेटा प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स का डेटा प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ फीमेल का डेटा प्रेजेंट है। ओके, सो दैट इज गेटिंग अप्लाइड एवरीवेयर। सिमिलरली आई कैन डू द सेम फॉर द स्पेंडिंग स्कोर। स्पेंडिंग स्कोर को भी मैं अप्लाई यूजिंग दिस डेटा सोर्स के लिए करता हूँ, स्पेंडिंग स्कोर के लिए भी। इफ आई डू दैट, नाउ दिस पर्टिकुलर फिल्टर इज आल्सो अप्लाइड टू ऑल द डेटा सोर्सेस। पुट बैक हियर लाइक दिस। डेटा मैं वापस अंदर डाल देता हूँ। हियर अप्लाई, अप्लाई ऑल यूजिंग दिस डेटा सोर्स पे क्लिक करना है, दैट्स ऑल। सो ये फिल्टर्स जो है वो सारे शीट्स में कॉपी हो गए अभी। ओके, now once you're done till here, let me know and we'll move on to the next one. Okay, let's add a dashboard now. ठीक है, डैशबोर्ड के लिए क्या बोला था हमने, अ डैशबोर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स और कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स। तो ये एक रिपोर्ट हो गया, 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 ऐसे सारे रिपोर्ट्स हैं हमारे पास। तो अभी मैं क्या करता हूँ, वर्कशीट नहीं ऐड करता, मैं डैशबोर्ड ऐड करता हूँ एक। ठीक है, ऐड ए न्यू डैशबोर्ड हियर। सो डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ एंड दिस पर्टिकुलर यूआई इज शोन, जो अभी एम्प्टी है। ये डैशबोर्ड मेरा अभी तो एम्प्टी है। बाय द वे, अगर आपने सेव नहीं किया तो बीच बीच में सेव करते रहो, दैट यू डोंट लूज ऑन डेटा ऑन वर्क दैट यू हैव completed till now. Okay, now in this dashboard we want to add sheets. sheets कौन से अवेलेबल है हमारे पास, ये जो है यहाँ पर सारे sheets की लिस्ट है, जितने भी sheets हमारे पास प्रेजेंट है उनके सबकी लिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। जेंडर वाइज एवरेज इनकम, जेंडर वाइज एवरेज स्पेंडिंग, एज डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेंडिंग स्कोर, एज बॉक्स प्लॉट, ये सारे प्रेजेंट है यहाँ पे शीट्स। ठीक है, और
दीज आर सम ऑब्जेक्ट्स कि अगर आपको कोई टेक्स्ट ऑब्जेक्ट डालना है या फिर कोई हॉरिजॉन्टल कंटेनर डालना है, दिस इज अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप बाय द वे। ओके, अगर आपको कोई वेब पेज डालना है तो सब कुछ आप डाल सकते हो, ये आउट ऑफ द बॉक्स ऑब्जेक्ट्स है। लेकिन ये आपके रिपोर्ट से या ये आपके शीट से। लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप वन शीट राइट नाउ। तो मैं इसको ड्रैग करके ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैंने इसको ड्रैग करके ड्रॉप किया, ये जो जेंडर वाइज एवरेज इनकम का शीट था वो अभी ऐड हो गया मेरे इसमें वर्कशीट में। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा चेक मार्क दिखना चाहिए। सो एवरीवन डू दैट, जेंडर वाइज एवरेज इनकम को ऐड करो। लेट मी नो वंस यू आर डन। नाउ what we are going to do is we are going to add एज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड वाला। ठीक है, सेकंड वाला नहीं ऐड कर रहे हम लोग, थर्ड वाला ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एंड दिस थर्ड वन आई एम गोइंग टू ऐड, लेट्स से because this is a age distribution, right? So let's say इसके नीचे ऐड करना है मुझे। तो I want to show it such a way that this gender wise average income is half and that age distribution is in the bottom half। तो इसको ड्रैग करना है और इसको ड्रॉप करना है ऐसे नीचे बॉटम में। ये हाईलाइट होता है, देखो जहां पे ड्रॉप करना है वो ऐसे इट शोज इन अ ग्रेड आउट वर्जन और ग्रेड आउट लेआउट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं छोड़ देता हूँ तो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। इफ आई लीव इट हियर इट इज गोइंग टू बी ड्रॉप्ड इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन। नाउ लेट्स ड्रॉप इट हियर इन दिस पोजीशन, बॉटम वाले पोजीशन में। लीव, डन, ड्रॉप हो गया। half space is taken by the gender wise average income, other remaining space is taken by your age distribution। ओके, यहाँ पे स्क्रॉल बार है राइट साइड में, इसलिए हाफ ऑफ नहीं दिख रहा है एग्जैक्टली, बट हाफ ऑफ स्पेस लिया है उसने। इसके साथ में इसने ये जेंडर का जो आपका लेजेंड है वो भी ऐड हो गया यहाँ पे। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दैट लेटर। अभी के लिए लेट्स कीप इट। यू डोंट एक्चुअली नीड दिस। इसको रिमूव कर देते हैं हम लोग। टू रिमूव दिस, क्लिक ऑन दिस बटन, या दिस, सॉरी, यहाँ पे क्लिक करो। एक सॉरी, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करो। it will be showing you highlight like this and then there's a more options here and you can say remove from dashboard and it will get removed। because माउस ओवर करते हैं तो पता ही चल रहा है हमें इट्स अ मेल एंड दिस इज अ फीमेल। जब माउस ओवर करते हैं तो पता चल रहा है, तो यू डोंट नीड द लेजेंड देयर। एंड एनीवेज दिस इज एक्चुअली नॉट अ गुड प्लॉट बिकॉज यहाँ पे हमने मेल को ऑरेंज में दिखाया और यहाँ पे मेल को हमने ग्रीन में दिखाया। आइडियली मेल यहाँ पर भी ऑरेंज दिखना चाहिए और फीमेल यहाँ पर ब्लू दिखना चाहिए। But we'll get to that cleaner charts later. I think we already have discussed what is a clean chart, how should the charts be looking and all of that. So you can decide on that when you do the projects. अभी क्या करना है मुझे, जो जेंडर वाइज एवरेज स्पेंडिंग है उसको मुझे इस हाफ में रखना है। ये जो जेंडर वाइज एवरेज इनकम लेफ्ट में रहेगा और जेंडर वाइज एवरेज स्पेंडिंग राइट में रहेगा, ऐसे दिखाना है। तो आई जस्ट हैव टू सेलेक्ट दैट, ड्रैग एंड ड्रॉप। ग्रेड आउट एरिया में पता चल रहा है कहाँ पे ड्रॉप होने वाला है। Drop it there, there it is, female, male, male, female. This is average income, this is average spending, again this is the average age। फाइनली आपका जो बॉक्स प्लॉट है उसको अभी हम लोग इसके हाफ साइज में दिखाएंगे राइट साइड में। तो आई जस्ट हैव टू सेलेक्ट दिस, ड्रैग एंड ड्रॉप इट राइट साइड ऑफ दिस। so this is my dashboard right now। जैसे ही मैंने बॉक्स प्लॉट ड्रॉप किया यहाँ पे फिल्टर्स भी ऐड हो गए।
Okay, यहाँ पर filters भी add हो गए. And because these filters are applied to all the sheets, अगर मैं कोई भी एक अनचेक करता हूँ तो सारी शीट्स का डेटा अनचेक हो जाना चाहिए. ओके, अगर मैं एक चेक करता हूँ सारी शीट्स का डेटा अपडेट हो जाना चाहिए अपने आप. अगर मैं इसको ड्रैग करके ऐसे करता हूँ तो सारी शीट्स का डेटा अपडेट हो जाना चाहिए. ऑलराइट. Because this filter is applied to all the sheets. Now this is an example of a dashboard. इसको सेव करो. This is the example of a dashboard. Obviously आप इसको भी मूव कर सकते हो, इसको भी मूव कर सकते हो. Okay, you can move this to various positions, right, depending on how you want to do it. यहाँ पे लेआउटिंग के ऑप्शन है, you can use these options too. If you can make the style to floating. Floating का मतलब होता है कहीं पर भी अपने मर्जी से प्लेस करना है. Tiled का मतलब होता है Tableau will help you decide this. एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं होना चाहिए, उसके लिए टाइल्ड यूज करते हैं यूजुअली. टाइल्स कैसे रहते हैं हमारे फ्लोर के टाइल्स? दे आर साइड बाय साइड, राइट? दे आर नेवर ओवरलैप्ड ऑन वन ऑन ईच अदर. फ्लोटिंग का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई यू हैव दिस टाइल्ड एंड फ्लोटिंग थिंग. बहुत सारे चीजें हैं और यहाँ पर भी यू कैन यूज ऑल ऑफ दिस. विल गेट देयर वन बाय वन. और यू कैन एक्सप्लोर इट ऑन योरसेल्फ टू. इट्स नॉट टू डिफिकल्ट. जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज ऑल ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट? हमने शीट्स बनाए 6-7, लेकिन हमने 4 ही यूज किए डैशबोर्ड में, विच इज परफेक्टली फाइन. It's not necessary that you create multiple sheets and use all of them. You may end up using a few and you may not use the other ones. Or maybe you can change them based on some other parameters that we are going to discuss. Dynamically आप sheets भी change कर सकते हो. Or it all get good till here? Yes, no. Okay. Yes, sir. All right. ये publish करना है, save करना है, and then you have to go to your profile. You just close this, I think, from here. Close पे click करना है and close it. So close this. You should see this particular sheet here like this. So यहाँ पे आपका dashboard number 1 है, जो आपने dashboard अभी create किया. ये आपका dashboard यहाँ पर दिखेगा directly. You can check. You can do interaction with it right here. In fact, if I share this with you all should be able to have access to this. Okay, and alternatively, you all can share yours too. Now, what we are going to do is we are going to create a new one and we are going to use a different data set. So the data set that we are going to use is called as Superstore Sales Data. It is one of the most commonly used data set for Tableau. Post the link here. Click on that link. Go to the download button here. Okay, so download करना है. If you're not able to find it, I'll also send you the download directly. Okay, ये download किया मैंने sample store data. Drop it here directly.
just in case if you're not able to download it for some reason. तो ये एक्सेल शीट डाउनलोड करनी, डाउनलोड हो गया सबका? लेट मी नो वंस डन. ऑलराइट, अभी क्या करना है हमें? वी वांट टू क्रिएट अ न्यू वेब ऑथरिंग विच इज अ न्यू डैशबोर्ड, न्यू वर्कबुक, और यहाँ पे अपलोड करना है जो हमने डाउनलोड किया थोड़ी देर पहले, उसको से अपलोड. Okay, let me know once you'll upload it. सर फिर से बताओ क्या क्या, आवाज चला गया था आपका. ओके, सो ये डाउनलोड किया आपने फाइल, ये वाली यस. सुपर स्टोर. ओके, फाइल डाउनलोड की ना. यू हैव टू क्रिएट अ न्यू रिपोर्ट या फिर वर्कबुक. क्रिएट वेब ऑथरिंग, यहाँ पे अपलोड करनी है वो फाइल जो आपने डाउनलोड की. This is the same procedure that we did last time, which is creating a new worksheet. Okay, और ये ऐसे empty दिखेगा आपको जब आप क्रिएट करोगे तो. So every time we create a new workbook, we have to connect first to the data. ठीक है, डेटा क्या यूज करना है पता रहना चाहिए, डेटा के साथ कनेक्ट करना है. यू कैन यूज files, you can use data connections, database connections, you can use links, URLs, APIs. Tableau has many connectors and you can use one of those connectors to get the data or connect to the data. अभी तक हम लोग अपलोड वाला ही ऑप्शन देख रहे हैं. नाउ जो एक्सेल शीट है आपकी सैम्पल सुपर स्टोर की, उसमें 3 शीट्स हैं. एक्सेल शीट में मल्टीपल शीट्स रह सकते हैं, राइट? तो एक्सेल शीट में 3 शीट्स हैं. एक है ऑर्डर्स का, दूसरा है पीपल का, और तीसरा है रिटर्न का. तो इसमें इसमें लेट मी जस्ट चेक हियर, वी नीड ऑर्डर्स. ठीक है, इसमें जो ऑर्डर्स का शीट है उसको ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है यहाँ पे एम्प्टी स्पेस में राइट साइड में जो है. ड्रैग एंड ड्रॉप इट देयर. After that, just click update now here on the right side. So what this data is about, this is the orders data. कस्टमर्स ने कौन से ऑर्डर्स प्लेस किए उनका डेटा है ये ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर का डेट है, व्हेन वाज द ऑर्डर शिप्ड, हाउ वाज द शिपिंग डन, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास. सेकंड क्लास मतलब स्लो शिपिंग, फर्स्ट क्लास मतलब फास्ट शिपिंग एंड सो ऑन. ठीक है, उसके बाद में कस्टमर का आईडी क्या था, कस्टमर का नेम रहेगा उसके बाद में. ओके,
सेगमेंट क्या था, so all of that information is present here. कंट्री कौन सा था, सिटी कौन सा, स्टेट, रीजन, प्रोडक्ट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे। ये श्वेता, या सर नेटवर्क इशू था, कुछ समझ नहीं आया। ओके मैंने सिर्फ ड्रॉप किया, ये ऑर्डर्स जो था इसको ड्रैग करके ड्रॉप किया हाँ। मैंने यहाँ पे। ओके और मैं अच्छा। फील्ड्स के नाम बता रहा था, इसमें फील्ड्स कौन से प्रेजेंट है। थोड़ी देर पहले हमने जो देखा उसमें तीन चार ही फील्ड्स प्रेजेंट थे, राइट। उसमें जेंडर था प्रेजेंट, फिर उसके बाद में स्पेंडिंग इंडेक्स था या फिर स्पेंडिंग स्कोर था, और एज था। उसी तरह से यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट में देर आर मल्टीपल वर्कशीट्स। आउट ऑफ दिस वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर शीट इज द ऑर्डर्स। इसलिए ऑर्डर्स को ड्रैग करके ड्रॉप किया मैंने, और ऑर्डर शीट में ये सारे कॉलम्स प्रेजेंट हैं जो राइट साइड में आपको दिख रहे हैं। क्वांटिटी, सेल, प्रॉफिट कितना, ऑल ऑफ दिस इज प्रेजेंट। ओके, नथिंग न्यू, नथिंग फैंसी, सेम थिंग दैट वी डिड विद द अर्लियर वन, ओनली थिंग इज यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट आई गो टू शीट वन। यहाँ तक सब कुछ सेम है, एक्सट्रैक्ट क्रिएट होगा और सब कुछ सेव होगा। यहाँ तक एवरीथिंग एल्स इज सेम फ्रॉम द प्रीवियस वन। कंट्रोल एस करना है, इसको नाम देना है सुपर, से शो शीट्स, नल से पब्लिश। इफ यू वांट टू गिव सम अदर नेम यू कैन डू दैट। कंट्रोल एस करके सेव कर सकते हो आप। लेट मी नो वंस डन टिल हियर। यहाँ तक हो गया सबका। सिर्फ नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज हुए आपके, ठीक है, बाकी सब सेम है। रिपोर्ट क्रिएट करना, आपका जो मेन्यू बार है, टूल बार है, डेटा पेन है, कार्ड्स है, शेल्फ्स है, सब सेम है। डन टिल हियर। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, वी वांट टू प्लॉट समथिंग व्हिच इज मंथली सेल्स या फिर मंथ एंड ईयर वाइज सेल्स कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट आई वांट टू प्लॉट इज समथिंग लाइक दिस। वी वांट टू प्लॉट एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे रहेगा आपका मंथ और ईयर, वाई एक्सिस पे रहेगा सेल्स, ठीक है। सेल्स इन डॉलर्स कितना हुआ वो सेल्स रहेगा आपको वाई एक्सिस पे। और आपको ऐसे लाइन दिखेगी, ऐसे कुछ तो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या फिर जो भी है वैसे लाइन दिखनी चाहिए आपको। दिस इज व्हाट द गोल इज, दिस इज द लाइन चार्ट। टाइम सीरीज डेटा है एंड दिस इज द लाइन चार्ट दैट वी वांट टू ड्रॉ। लेट्स गो बैक हियर। क्या करना है हमें एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमें चाहिए टाइम। लेट्स पुट ऑर्डर का डेट क्या है, दैट एज अ कॉलम। नाउ दिस इज ईयर राइट नाउ। टैब्ल्यू
will automatically have something called as hierarchy. हायरार्की मतलब सबसे ऊपर होता है डेट. डेट के अंदर क्या आता है? क्वार्टर. फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर. फोर्थ क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं एवरी ईयर. क्वार्टर के अंदर आता है मंथ, 12 मंथ्स एवरी. उसके बाद में आते हैं डेट्स. एग्जैक्ट डेज क्या क्या है. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू कोलैप्स दिस हायरार्की बैक टू द ईयर. और मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले क्या दिखाया था आपको? दिस हैज टू बी मंथ एंड ईयर, राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, मोर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे बोलना है मंथ मंथ मंथ, वाई वाई वाई. इसको चेक करना है. अगेन यहाँ जाना है, मोर पे क्लिक करना है, मंथ मंथ मंथ, वाई 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 पे क्लिक करना है, बिकॉज आई वांट टू सी मंथली. अगर आपको मंथली नहीं चाहिए तो आप ईयर लेवल पे भी रह सकते हो. मे बी यू जस्ट वांटेड एट द ईयर लेवल, सो आप ईयर लेवल पे भी रह सकते हो ऐसे. यू जस्ट हैव इट एट द ईयर लेवल नाउ. 2014 में कितना सेल हुआ, 2015 में कितना हुआ, 16 में कितना हुआ, 17 में कितना हुआ. ये जो ऑर्डर डेट है आपका, दिस इज एग्जैक्ट डेट, लेकिन टैब्ल्यू ने उसको स्प्लिट किया ईयर में, मंथ में, क्वार्टर में, एंड ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. राइट. कैन ऑल्सो हैव एग्जैक्ट डेट, या फिर आप क्वार्टर वाइज भी आ सकते हो ऐसे. ऐसे क्वार्टर वाइज, तो ये क्वार्टर वाइज कुछ इस तरह से दिखेगा. दिस इज 2014 का क्वार्टर 2, 2014 का क्वार्टर 4, 2015 का क्वार्टर 2, क्वार्टर 4. ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसे दिखेगी यहाँ पे. Some mistake here, I think. I'm just going to keep it at the month and year for simplicity. June, July, August, September, October, November, December, January, February, March, April, May, June, and so on. ऐसे सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास 2017 तक. ओके. ऑल गुड टिल हियर. यहाँ तक हो गया सबका. ओके. नेक्स्ट आई वांट सेल्स. तो जो सेल्स का मेजर है उसको ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है रोज में. And you'll see a line plot here. This is the line plot that we're talking about. All right. 2014 में कितना हुआ फरवरी के सेल, 2014 के सितंबर में कितना हुआ, okay? फिर फरवरी में कितना हुआ, फिर से सितंबर में कितना हुआ. राइट. सो एज यू कैन सी हियर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास एवरी ईयर देयर इज अ पीक. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, दिसंबर एंड नवंबर, ये 3 ईयर्स में, 3 मंथ्स में एवरी टाइम देयर इज अ पीक. सितंबर, नवंबर, दिसंबर. ओके. सितंबर, नवंबर, नवंबर, यहाँ नवंबर एंड दिसंबर. So every year इस 3 मंथ्स में पीक दिख रहा है, विच इज नॉर्मल बिकॉज दोज आर द हॉलीडे सीजन्स. यू कैन ऑल्सो एड अ लेबल हियर. लेबल मतलब होता है कितना सेल हुआ. अगर उसको मैंने चेक मार्क कर दिया ऐसे, देन it will tell me the numbers here like this. That is to show the numbers. Now what is this? This is monthly sales. Let me know once you're done till here. सर उसका एवरेज लेना पड़ेगा या सम ही रखना पड़ेगा? Sum.
आई डोंट वांट एवरेज सेल्स, आई वांट सम, मैं कितना सेल हो रहा है एवरी मंथ में, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग एवरेज। डिपेंडिंग ऑन आपका गोल क्या है, इफ यू वांट टू टेक एवरेज सेल कितना हो रहा है एवरी मंथ में, यू कैन आल्सो डू दैट, बट आई एम इंटरेस्टेड इन सम ऑफ द सेल्स। ठीक है, you can also change this measure to take average, it's up to you, but we are interested in sales कि monthly कितना सेल हो रहा है, every month कितना सेल हो रहा है, that's fine. Okay, हो यहाँ तक हो गया? All right, now let's use the पोस्टल इन्फॉर्मेशन या फिर ये स्टेट की इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे दिखती है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। गोइंग टू ऐड अ न्यू वर्कशीट, ऑलराइट, और आई हैव पोस्टल कोड, आई हैव स्टेट, आई हैव कंट्री एंड आई हैव सिटी। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई वांट टू सी स्टेट वाइज मेरा प्रॉफिट कैसा है। ठीक है? तो स्टेट वाइज प्रॉफिट अगर दिखाना है तो लेट्स से दिस इज हाउ, दिस इज द मैप ऑफ यूएस। ओके, दिस इज द मैप ऑफ यूएस, यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स है ऐसे, और हर स्टेट में कुछ तो सेल हो रहा है। आई वांट टू शो दिस मैप, और यहाँ पर लिख के रहेगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे 32 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 62 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 41 का प्रॉफिट हुआ, जो भी प्रॉफिट हुआ मुझे ऐसे दिखाना है मैप पे। ठीक है, तो स्टेट्स चाहिए मेरे मुझे उसके लिए, और प्रॉफिट चाहिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर हियर, सो आई हैव स्टेट, just drag and drop it into the columns here like this. Okay, so ये 50 states आ गए। उसके बाद में I'm going to take profit and I'm going to add it here. So again, sum of the profit. प्रॉफिट का जो भी सम है वो यहाँ पे अभी हमें दिखेगा कि कुछ कुछ स्टेट्स में नेगेटिव है, कुछ कुछ स्टेट्स में पॉजिटिव है, बेसिकली टेलिंग यू कि देयर आर सम स्टेट्स व्हिच आर हैविंग मोर प्रॉफिट एंड देन देयर आर सम स्टेट्स वेयर वी आर मेकिंग लॉस। ओके, नाउ यू कैन गो टू शो मी, press this maps button which is the second one from here. Okay, and I'll just click that. As soon as I do that, longitude यहाँ पे चला गया, latitude यहाँ चला गया, जो यहाँ पर भी present है columns. You can also drag and drop like that. ये आपका हो गया मैप। ये प्रॉफिट्स है यहाँ पे, जो रेड कलर में दोज आर योर लॉसेस। आपको लेबल दिखाना है तो यू कैन जस्ट डू द सेम थिंग, ड्रैग करो, मार्क्स कार्ड पे ड्रॉप करो, यहाँ पे क्लिक करके टेल टू ऐड अ लेबल, लेबल ऐड हो जाएगा सब जगह पे अपने आप। ओके, यहाँ तक हुआ तो बताओ मुझे। Alright, so this is the map, okay? And this is built-in feature of Tableau. You did not know about the longitude, latitude, it can get it for you directly. Now, what we are going to do is, ये जो profit है, this is a continuous variable right now. And because this is a continuous variable, ये values थोड़े से
We can still make out of it, but let's try to have discrete values, or let's try to have some. Harish, you have a question? Yes, sir. Please wait, sir. Yeah. Actually, I Okay. didn't drag and drop. Yes. Okay. Okay. All right. So let me know once done. Yes, sir. Done, sir. Done. Okay. Good. So now what we are going to do is, ये जो profit है, this is continuous, right? So this is continuous, as in ये range जो है, starting from some blue red spectrum, it's going all the way to the blue spectrum. This is continuous. We can change this to have only 5 colors, or maybe 7 colors, depending on whatever the thing that we decide. So go here, click on this and say edit colors. और यहाँ पे you have to tell stepped colors. This will tell you to how many colors to have in this part. So I'm just going to have 2 colors now, which is अगर negative रहेगा तो have a red color, अगर positive रहेगा तो have a blue color. You can also have advanced here. You can center it to 0 like this here. By default it's centered to 0. You don't have to do it if you don't want to. और इसको close करना है. Now there are only 2 colors. अगर negative है तो रेड कलर, अगर पॉजिटिव है तो ब्लू कलर. यहाँ पे ये डायग्राम देख के सीधा सीधा पता चल जाता है आपको इन व्हाट स्टेट्स द प्रॉफिट इज, वी आर मेकिंग लॉस, एंड इन व्हाट स्टेट वी आर मेकिंग अ प्रॉफिट. सो सर सेंटर में क्या करना है? center 0. So I'll show advanced center 0. You can change the center to anything, but for now it's 0, because 0 से कम रहेगा तो negative, and loss 0 से ज्यादा रहेगा तो positive. You can change the center. You can say that I want everyone to make at least $100 of profit, or maybe 1,000 of profit. So center can be 1,000 like this. And as soon as I do that, center 1,000, जो भी 1,000 से कम है वो रेड हो जाएंगे. यहाँ पे पीछे प्लॉट में आपको दिखेगा 454 is less than 1,000, right? तो ये रेड हो गया. Okay, but we are going to keep the center at 0 just to keep it consistent. All right, all good till here. Okay, अभी हम क्या करने वाले हैं? Now let's try to have 2 plots in one, which is called as dual plotting. Okay, the goal is we have sales here like this, then we have year month. Okay, so we have um, month and year, and we have sales here. Okay, or we know how to plot this manner, correct? In this manner we know how to plot this, but we also want to show bars here like this. हमें bars भी दिखाने हैं यहाँ पे. Okay, this is called as dual axis. We want to show the bars and we also want to show the sales here like this. So let's learn how to do that. If you're not able to follow this part, it's fine. I'm going to share the recording. Okay.
So I might go a little faster because we might run out of time. But don't worry, I'll share the recording. So हमने क्या करना है, मंथ और ईयर चाहिए वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, और सेल्स चाहिए वाई एक्सिस पे. So go to month and year. Where is that month and year? Order date. Sorry. So go to order date, drag and drop into the columns. Right click, go to more, and I'll say month, month, year, year. Thing like this. Next, I'm going to take profits this time. ठीक है, monthly profits कैसे change हो रहे हैं मेरे? That is what I'm interested in. Drag and drop the profits into here like this. So this is my profits. Sometimes profit is negative, sometimes profit is positive. Sometimes profit is negative, sometimes it's positive, and so on. Okay. Abhi, I want to access, right? I want to show profit as the bars also. So इस बार क्या करना है? Profit जो है, जो यहाँ present है पहले से, I have to drag and drop it again here. Alternatively, what I can do is I can press Control button and then do a drag and drop it here like this. Control button, drag and drop it like that. इसे दिखाता हूँ मैं. I'm pressing Control button now. After that, I'm pressing the, I'm dragging it and dropping it here on the right side. Mouse से drag drop किया. अगर वैसे नहीं कर पा रहे हो, so go to this profit, drag and drop it in the rows column here like this. If that is not possible, I because of various reasons. If we have some um, formula created here, we can just do a drag and drop in the control. Okay. Next is here you can see under the marks card there are two options. First is the sum profit. Second is the sum profit 2. Sum profit 2 जो है, we are going to change this into a bar plot now. So just go to this automatic, convert this to a bar plot. ठीक है, ये हो गया आपका बार प्लॉट अभी. ठीक है, we are still not yet converged. Okay. In addition to this, we also want that negative and positive thing here. So go to this profits, drag and drop it here. इसको कलर दे दो आप ऐसे. Okay. Again, go to this profit, edit colors, stepped, only 2. Okay. Close it. इससे क्या हो गया, जो नेगेटिव है वो रेड रहेगा, जो पॉजिटिव है वो सब ब्लू दिखेगा आपको. ओके. नाउ वी आर गोइंग टू मर्ज दिस इनटू दिस वन सिंगल प्लॉट. अभी दो दो प्लॉट है ना, तो इसको सिंगल प्लॉट में कैसे कन्वर्ट करते हैं. यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और सेकंड वाले पे, ठीक है, फर्स्ट वाले पे नहीं. फर्स्ट वाले पे आता है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर. ठीक है, फर्स्ट वाले पे नहीं आएगा, सेकंड वाले पे आएगा ऑप्शन. ठीक है, तो सेकंड वाले पे क्लिक करना है एंड से ड्यूअल एक्सेस. ठीक है, ड्यूअल एक्सेस पे क्लिक करना है. इट गॉट मर्ज टुगेदर. ओके, दोनों एक साथ मर्ज हो गए अभी. ऑलराइट, आपके जो लेफ्ट साइड में कार्ड्स थे वो कार्ड्स जैसे के वैसे ही प्रेजेंट है यहाँ पे. नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू ऐड लेबल्स नाउ. तो जो आपका ये जो है लाइन प्लॉट, यहाँ पे लेबल्स ऐड करता हूँ. सो दिस इज व्हाट लाइन, ये जो लाइन है आपकी प्रेजेंट, उसका कार्ड ये है. जो आपके बार प्लॉट है उसका कार्ड ये है. तो लाइन के प्लॉट पे जाना है और लेबल्स ऐड करने हैं. I'm just going to say show label marks here like this. Okay, तो ये हो गया आपके लाइन प्लॉट के ऊपर लेबल्स. Now this is a little bit confusing or this is not looking really nice. What you can do is you can go here in the sum profit card, go to the color, reduce the opacity to something maybe 20 or 18. Okay. As soon as I do that, now things are much cleaner. Okay, now things are much cleaner.
You can see this lines directly. You can, because the opacity is low, you can see this plots too. So this is a dual axis. This is how you create dual axis. Very important. You might have to do it for your data visualization project. So just have this video revised again and again. I'm going to add one more thing here, which you have to practice later. Now, ये तो हो गया profit. What if monthly I also want to see sales कितना हो रहा है? Okay. All I have to do is I have to select this. ये axis तो अभी fixed है, ये नीचे ही रहेगा. I don't want to change this. ठीक है? So take sales and drop it into the columns here like this. तो ये हो गया sales अभी. यहाँ पे नीचे sales आ गया आपका. उसका कार्ड यहाँ पर है, इसको क्लोज कर दो इस कार्ड को. उसका कार्ड यहाँ पर है सेल्स का. ठीक है? सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स उसका कार्ड है ये. दिस इज अ लाइन प्लॉट. I want to show labels here. Show the labels here like this. Okay, that's all. So this is your sales. So January के month में, if I just select this January, February के month में, I had a sale of 4520. I had a profit of 862. Okay. Same thing. You can have dual access for the sales as well. तो फिर से sales पे जाओ, इसको drag करो, इसको drop करो यहाँ पे, and then ये जो आपका sum of sales है इसको चेंज करो सबसे पहले तो. both are lines right now. तो जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला हमेशा राइट साइड में रहेगा आपका. सेकंड वाले पे जाओ and convert this into a bar like this. ये हो गया आपका बार. इसको दे दो, make it इसको opacity दे दो 20 की. Does not overlap. And then go here like dual axis. Done. So now you can see profit, you can see sales monthly, everything in one plot. एक ही sheet में. You can also go crazy here. You can also add discounts or quantity. That is also possible. Okay, I'll just show you a little bit complex version. Maybe you want to do it, maybe you don't want to do it. It's up to you. Let's add discount also here. Sum of discounts. So ये हो गया आपका sum of discounts. This time I'm going to change color of this. I'm going to give it a blue color here like this. Okay. So sum of discounts, sum of discounts. ये सब कार्ड्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं हमेशा. Your cards are never gone. Sum of profit का कार्ड है ये sum of profit है, उसका कार्ड ये है. Sum of profit 2 मतलब ये इसका कार्ड है. You have to open that to edit particular thing. ठीक है? Now I'm editing this sum of profit. That's why sum of discount. I'm going to show some labels here like this. Labels दिख गया. ठीक है? Discount कितना है? Now I think this is percentage, so that's why इसको sum की जगह पे let's take average of this, I guess. That would be, or maybe median. Let's take a median value of this discounts. Yeah, it's too bad. ठीक है, इसका sum ही रखते हैं. 0 and 1 से शायद से इसमें बहुत सारे. Okay. Maybe discounts की जगह पे let's take something else. Let's take quantity. I'll just take quantity here. So quantity को drag and drop किया, and quantity मेरा यहाँ पे है. Change the color of it. Do a blue color to that. Dark blue color. Changed. फिर से क्वांटिटी को सेलेक्ट करना है, ड्रैग करके ड्रॉप करना है यहाँ पे. फिर इसकी क्वांटिटी 2 यहाँ पे नीचे आ गया. इसको कन्वर्ट करो, मेक इट अ बार प्लॉट. ओके, दिस इज अ बार प्लॉट नाउ. इसको कलर देना है, इसको ओपेसिटी दे दो 20. Okay. So maybe put the same color and then do a click here, say dual axis. और उसको अगर दिखाना है आपको, just go to quantity and show bars. Right? So this is a little bit complex, but it shows quantity, sales, and profit all in one plot. Okay, I'll just say
I'm going to pause here for some time now. Okay. I know this might be a lot of information, but you'll have this video recording. So you can go back, make sure you revisit this and try it yourself too. Follow karo dheere dheere, you'll understand. Okay. You can either drag it or drop it from here, or you can do control and drag and drop there itself. वहाँ के वहाँ. Both will work. यहाँ पे कार्ड होते हैं हर एक के लिए अलग. Everyone is going to have their own card here separately. इसका कार्ड ये है, इसका कार्ड ये है. Everyone will have their own cards. You can edit individually. So let's say I want to change the color of this. Change the color of that to purple. So सिर्फ उसी का कलर चेंज होता है इस पर्टिकुलर का, क्योंकि ये सम ऑफ प्रॉफिट है इस पर्टिकुलर कार्ड के बारे में चलती है इंफॉर्मेशन. All right, I'm going to save this right now, and we are going to continue our discussion on this particular dashboard in the next session, which is tomorrow. Okay. Yes. All right.